ठीक है स्टार्ट करिवा आई होप समस्त ब्रेक रू आसी जाइछन्ती अच्छा ए क्वेश्चन रो आंसर आसला 8 mm आछी ओके 8 mm आछी ठीक अछि केजे आसला वेरी गुड सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम देखि परथबो एटी जो ऑब्जेक्ट देइछि तुमको ए ऑब्जेक्ट रो थिकनेस बहुत कम अछि हला सो थिकनेस इज वेरी स्मॉल थिकनेस तो स्मॉल थिकनेस पाई कोन होइथाय जेतल थिकनेस बहुत ही कम थाए सेतबेले हमें कोन कर परिबा सेतबेले हमें मैग्निफिकेशन रो को फार्मूला यूज करिबा हमें यूज कर दबा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन जो तरे हमें कोन करू थिकनेस इमेज रो थिकनेस ऑब्जेक्ट रो एंड दैट इज गिवन बाय माइनस बी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कर दबा राइट लॉन्गिट्यूडिनल में अच्छा ये ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस तो दे दी -15 सेंटीमीटर भाई थिकनेस जेतले बहुत छोट अछि यस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन तो थिकनेस जेहेतु बहुत छोटा अच्छी तो वी कैन गो फॉर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन सो u इज -15 फोकल लेंथ कथा जदि हमें कहबा पिले माने फोकल लेंथ केते जो -10 सेंटीमीटर अच्छा एटी हमें को v कैलकुलेट करियर अछि तो v कैलकुलेट करले 1/v + 1/u = 1/f ताले एटी जस्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को तो v आसी जिवो केते -30 सेंटीमीटर एटा ऑलरेडी हमें काढी थिले प्रीवियस एग्जांपल में ना कोन तो थिकनेस ऑफ द इमेज केते हिजबो थिकनेस ऑफ द इमेज हिजबो -v² / u² इनटू होला इनटू थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो v² / u² केते गला सिंपल पुट कर दियो -30 * 30 डिवाइडेड बाय u². ओके तो एटा केते आछिबो 15 * 15 एंड थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट केते 2 mm तो ऑब्वियसली एटा 2 एटा भी 2 2 2 4 2 8 तो थिकनेस ऑफ द इमेज गला -8 मिलीमीटर राइट -8 मिलीमीटर माइनस कैम पे कने इन्वर्टेड इमेज हो हमने भाबो एटा जदी ए बी हला ना एटा उल्टा हे जिवो उल्टा माने एटा डायरेक्शन जदी एमती हो तर उल्टा डायरेक्शन आसीओ माने जो इमेज बनिबो ओके इमेज बनिबो तार थिकनेस केते 8 मिलीमीटर एंड जो इमेज रो डिस्टेंस रहिछि एटा केते सेंटीमीटर एटा ला 30 सेंटीमीटर मने रखो एटा 15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस केते इमेज डिस्टेंस ला 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर माने ऑब्वियसली आठो अधिक तो एटी कोड गुलो बनिबो किंतु डायरेक्शन टा उल्टा हे जिवो एटा हे जिवो बी एटा हे जिवो ए तो ए टू बी एमती आछिवो ओके तो दिस इज द इमेज दिस इज द ऑब्जेक्ट डन आर थिकनेस केते गला 8 mm तो तमे देखिबो चेक करिवो जोटी तुमको थिकनेस बहुत ही छोटो देइथिबो सेठी तमे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन रो फार्मूला को यूज करतो हला जोटी भी तुमको थिकनेस देइछि एंड इट इज वेरी स्मॉल गो फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन ठीक अछि अच्छा ऑन दिया चैट बॉक्स रे यस गुड एबे हमें जिबा गोटे नेक्स्ट ये को अच्छा समस्त एटा ट्राई करिवो हला कोन क्वेश्चन दला एग्जांपल 8 JEE 2025 रो दला डिस्टेंस between object and image okay magnified by -1/3 is 30 centimeter. The focal length of mirror used is x/4 centimeter.
then what is the value of x? Question को हलावे पड़ेगा. Distance between the object and image magnified by -1/3 is 30 centimeter. The focal length of the mirror used is x by 4 centimeter. তাহলে কত হবে? Integer type question. এই গোটে question পরে ମୁଁ ତମ velocity କଥା କହିଦେବି. Velocity ଆଉ କିଛି ଭଲ question ଦେଖେଇଦେବି. Velocity related. Then ଆମେ refraction को ଦେଖିବା. So we got some answer. Negative real image, that means to be a concave diminished. Yes, correct. ठीक अच्छी. तो देखो हमको जमती रामजी हायर सेकेंडरी स्कूल तरफ रू गोटे मेसेज मिलला जे सर मैग्निफिकेशन जेहेतु नेगेटिव अच्छी तो एटा रियल आउ इन्वर्टेड इमेज बनुछि. अच्छा रियल इन्वर्टेड कन्वेक्स रे तो केबे भी पॉसिबल ना वर्चुअल डायरेक्ट तो इट्स अ कॉनकेव मिरर. अच्छा कॉनकेव मिरर जेहेतु एटा कॉनकेव मिरर हमको x रो वैल्यू कैलकुलेट करियार अछि. देखो कॉनकेव मिरर पे कोन हला एटा हला कॉनकेव मिरर. अच्छा जेहेतु रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज रियल इन्वर्टेड केस तो एमटी का केस जो भी इमेज रो भी साइन टा कोन थे माने इमेज डिस्टेंस रो साइन भी नेगेटिव ही आसे माने अछि ना नै माने जो इमेज टी बनिबो तो ऑब्वियसली एटी कोडी बनिबो एपडे तो बनिबो नै एपडे मानते ना वर्चुअल इरेक्ट ही थांदा रियल इन्वर्टेड माने एटी कोडी बनिबो. तो एटा को हमको देखियार अछि से कहूची जे ऑब्जेक्ट और इमेज भीतर डिस्टेंस हला केते 30 सेंटीमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज धर ऑब्जेक्ट एठी अछि एटी कोड केस अछि और इमेज केमति का बनउछि रियल इन्वर्टेड इमेज बनउछि बुझिला ना. तो जदि रियल इन्वर्टेड इमेज बनउछि एंड दैट टू एटा डिमिनिश्ड इमेज बनउछि क्वेश्चन टा पढिबो जदि जदि देखिबो मॉड m को देखिबो मॉडुलस ऑफ m को जदि हमें देखिबा तो मॉडुलस ऑफ m is 1/3 and 1/3 is obviously 1 less than 1 right એટલે diminished image એટલે এটা কেতବେଳେ possible যেতବେଳେ অবজেক্ট টাକୁ ଆମେ beyond center of curvature ରଖିବା ଇମେଜ ଟା between c and f ବନିବ ହେଇପାରିବ ଏଇ କେସ୍ ହେଇପାରିବ ସर ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଟା beyond c ରହିବ ଇମେଜ ଟା କୋଉଠି ବନିବ ଏଟା ଫୋକସ ରୁ ଗଲା ଏଟା ତାପରେ पोल ରୁ ଗଲା ତାପରେ ଇଏ ଜାକରେ ଏଠି ଆସିଲା ଏଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଏ ଇମେଜ ବନିଗଲା. ओके तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें रखिले और इमेज टा हमें एटी पाइले. तापर से कहला द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 30 सेंटीमीटर. ओके एटा हला तमरो डिस्टेंस कोन u ए डिस्टेंस कोन तमरो v और ए डिस्टेंस केते देछि तुमको 30 हमने u इज इक्वल टू हमें कोन लिख परिया 30 प्लस v बाय u माइनस v इक्वल टू हमें कोन लिख परिया 30
फर्स्ट जिनिस सब डायग्राम को करिवो नले आंसर भूल आसीबो गारंटी कहूची आंसर भूल आछी मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन कोन माइनस v बाय u इज इक्वल टू -1/3 अच्छा एक केस रे u भी नेगेटिव एंड v भी नेगेटिव 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 तो पॉजिटिव तो माइनस माइनस तो कटि गला ताले व्हाट आई कैन राइट मैं लिख परिबी जे v इज इक्वल टू u बाय 3 एंड एटा को मु सब्स्टिट्यूट करि परिबी इन दिस इक्वेशन सो एटा को सब्स्टिट्यूट करले u माइनस केते u बाय 3 is equal to केते आसीबो 30 now if you solve this u केते आस जाउची 3u minus u केते 2u by 3 equal to 30 by u is equal to केते 45 45 centimeter जा भी हला 45 now v केते आस जीवो v पे हमें कोन यूज करिवो ए रिलेशन को यूज कर परिबो बस सिंपल एटा को यूज कर परिबो v is equal to u by 3 45 by 3 केते 15 सेंटीमीटर सो v केते आस जीवो 15 सेंटीमीटर हमको दरकार कोन फोकल लेंथ f पचार हम यूज करबा कोन मिरर फार्मूला 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f हां एठी हमें साइन कन्वेंशन पुट करबा साइन कन्वेंशन हिसाब रे u हला -45 v हला -15 और f हमको पचारी छी हमें जदी सब्स्टिट्यूट कर दोचे तो 1 by -1 by 15 ओके माइनस केते गला 1 by 45 इक्वल टू 1 by f ताको सॉल्व करले एटा केते 45 एटा 3 एटा 1 -4 by 45 तो केते आसी गला 1 by f आसी गला केते -4 by 45 बा f केते आसी गला -45 by 4 बा x रो वैल्यू केते सिंपल x रो वैल्यू वाला 45 ठीक अछि यस दैट इज करेक्ट बहुत बढ़िया आई होप तुम क्वेश्चन गुडा बुझी क्वेश्चन जते करबो सेते भलो तुम क्लैरिटी सेते बढी ओके आ गुडे क्वेश्चन जिबा एग्जांपल जेई रही 2023 दीटा पैरेलल प्लेन मिरर्स देची या आ गोटे प्लेन मिरर देची ता अबाउट पैरेलल अछि आंक भीतर डिस्टेंस देची केते ना 10 सेंटीमीटर एटी ऑब्जेक्ट देची केते ना ते डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर तो से पचाला कि एटी what is the distance of second nearest image behind the mirror A okay केते हो नियरेस्ट माने एटी तमे जानि परछो दिस आर पैरेलल मिरर्स 18 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया कहना एटा जदी 2 सेंटीमीटर हला तो ऑब्वियसली एटा केते 8 सेंटीमीटर हबो तो जदी ऑब्जेक्ट एटी अछि वेरी गुड बहुत बढ़िया पैरेलल मिरर्स केस रे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस को निकाय ना कोन एथि कोन थाय कि नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आस्ता है पैरेलल मिरर केस रे हां तो जते बेले तुम देखुछ एटी एबळा किछि तुमको केस देछि सिचुएशन देछि तो हमें केमति ड्रॉ कर परिबा आरो हम ए डायग्राम करी केमति कर परिबा गुड यस 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 ठीक अछि बहुत बढ़िया हला तो बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर दबारु तो ठीक अच्छे आंसर तो एटा 10 सेंटीमीटर रे अछि बहुत ठीक अछि तो ये ऑब्जेक्ट जदी 2 सेंटीमीटर हला आर इमेज भी केते डिस्टेंस से हबो से 2 सेंटीमीटर रे हबो
हाँ এটা ইমেজ কাহার ফার্স্ট ডিউ টু মিরর এ, এটা মিরর বি। সিমিলারলি অবজেক্ট যদি এটি 8 সেন্টিমিটার রহিলা আর ইমেজটা বি কেতে সেন্টিমিটার হব 8 সেন্টিমিটার হব। আর ইমেজটা কাহার ইমেজটা হলা ଫର୍ଷ୍ଟ ର ଇମେଜ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇମେଜ ହେଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିରର ବି। ଏବେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନରେ ଏହା ଜିନିଷ ଯେ ଭଲ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ये जो इमेज रहा ये आप गोटे ऑब्जेक्ट भाई बिहेव कर केते डिस्टेंस 8 8 16 टू 18 तो 18 सेंटीमीटर ना कौन बुझीपार मुझे कौन कहना चाहूँ ये जो आसला तुम ऑब्जेक्ट आसला ये केते डिस्टेंस रहा 16 प्लस 2 केते गला 18 तो 18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रहा ए मिरर ठार तो जदि ये 18 सेंटीमीटर रहिबो तो आर इमेज टा कोडी बनिबो आर इमेज टा भी सेतिकी डिस्टेंस बनी जीवो ना 18 सेंटीमीटर रे तो एटा इमेज कहार दुई रो ए जो सिमिलरली बी पाई ये भी ऑब्जेक्ट भाई एक्ट करिवो ये ऑब्जेक्ट है 2 टू 4 4 प्लस 8 12 तो केते डिस्टेंस रहिला 8 रु ऑब्जेक्ट टा 12 सेंटीमीटर रहिला तो आर इमेज टा केते डिस्टेंस बनिबो सेम 12 सेंटीमीटर बनिबो ना कोन इमेज एटा आसीबो सेकंड इमेज ड्यू टू बी 12 सेंटीमीटर तो नियरेस्ट पचाची बिहाइंड ए पाई आंसर हम 18 सेंटीमीटर तो हमारा गोटे पिला आंसर ठीक देइचंदी ओके यस इमेज ऑफ बी इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट बिकॉज एटा प्लेन मिरर अछि तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक ठीक अछि बहुत बढ़िया इमेज ऑफ बी इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट यस करेक्ट ओके ताले इमेज जो बी रो आसिला बी रो इमेज ए पॉइंट रे बनिला केते डिस्टेंस पड़ला 18 सेंटीमीटर रे हे गला और एटा ऑब्जेक्ट बढ़िया बिहेव करिवो फॉर मिरर ए এটা को वर्चुअल ऑब्जेक्ट କୁହାଯାଏ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ ମିରର୍ସ ତମକୁ ଦେଇଥାଏ ମଲ୍ଟିପଲ ମିରର୍ସ କେସରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତମର ଇମେଜ ବନିଯାଏ ପ୍ରଥମ ଇମେଜଟି ବନିଯାଏ ସେ ଅଲଗା ମିରରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରେ ଏଠି ବି ସେୟା ହୁଏ ଏଠି ଇମେଜ ବନିଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମେଜ ଏଟା ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମେଜ କାହା ଯୋଗୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିରର ବି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆ ପାଇଁ କଣ ହେଇଗଲା ଭର୍ଚୁଆଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଭଳିଆ ବିହେଭ କଲା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କରେକ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲା तो आउ गोटे दिटा क्वेश्चन लास्ट हम देखिदबा वाइंड अप करदबा देखो एबे हला कोन जिंस हला हमको देखियार अछि व्हाट इज द वेलोसिटी हला तो इना देखिबा वेलोसिटी मैग्निफिकेशन वेलोसिटी कोन देखो जते बेले हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराऊ वेलोसिटी देखो ऑब्जेक्ट को जते हमें मूव करेबा ऑब्वियसली कोन हो तो ऑब्जेक्ट मूव करिवो इमेज भी तमरो मूव करिवो करिवो ना तो ऑब्जेक्ट एठी तमरो केते प्रकार वे मूव करि परिवो दी प्रकार वे either parallel to the principal axis বা perpendicular to the principal axis ना तो जेतो ऑब्जेक्ट मूव करिवो perpendicular to the principal axis ना देखो ऑब्जेक्ट केते प्रकार मूव कर परिवो दी प्रकार आप ଗୋଟେ बढ़िया क्वेश्चन हम करिवा तो ऑब्जेक्ट दी प्रकार चल परिवो गोटे आइदर ऑब्जेक्ट जीवो एम्प्टी जीवो perpendicular to the principal axis भाई आठ रो कष्ट क्वेश्चन किछि देई परिबोनी बुझी पड़छ ना सब केस मु करई देली जेई कथा कहूची पर्टिकुलरली ये ऑब्जेक्ट कौन है माने मिरर मिरर और जो मैग्निफिकेशन और ये ऑब्जेक्ट मूव कला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दी प्रकार केस रे जदि हमें इमेज काढिबा देखो ऑब्जेक्ट मूव कला माने इमेज भी मूव कला ता माने इमेज रो जदि वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करिबा हां परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ताले परपेंडिकुलर केस रे हमें कौन यूज करू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ताने एठी हमें नबा मैग्निफिकेशन लैटरल into velocity of the object perpendicular to principal axis ठीक अछि जेतेबेले इमेज मूव करिवो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ए केस रे में कोन नबा मैग्नीट्यूड नबा पैरेलल माने अलोंग द लेंथ तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये दीटा फार्मूला हमरा बहुत ही इंपोर्टेंट नोट डाउन करा जाऊ आपरे किछि क्वेश्चंस देखि कि हम आगो को मूव करी
हला तो जीवा गोटे क्वेश्चन को वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ओके of today's class in a 3D coordinate system O X Y Z origin a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter is placed at origin, and this is given by VO vector equal to 9 I cap plus 6 J cap plus 3 K cap centimeter per second. Then find the magnitude of velocity of image. केमती कैलकुलेट करिबा टिके लेंदी अछि ट्राई कर परियो तो चाहिए 5 मिनट 2 टाइम ट्राई कर तापर हमर नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन को मैग्निफिकेशन -1/3 अछि मैग्निफिकेशन तुम पहचान magnitude of the velocity of the image magnitude अच्छा देखो एटा को हमें सॉल्व करिबा देखिबा √14/3 अच्छा हो ठीक अछि देखिया गुड ट्राई ओके देखो एडी कोन हला से दला गोटे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देछि OXYZ आ एठी हमें कोन करिबा गोटे कॉनकेव मिरर को रख देबा दिस इज द कॉनकेव मिरर ए पिले माने ए कॉनकेव मिरर को रखला परे यू कैन सी दैट एठी हमकु देछि जे ऑब्जेक्ट रो वेलोसिटी सब डायरेक्शन रे अछि x रे अछि y रे अछि आ z रे अछि सब डायरेक्शन रे अछि हमने x डायरेक्शन में केते अछि इट इज 9 y डायरेक्शन में केते अछि इट इज 6 and z डायरेक्शन में केते अछि एटा 3 6 एटा 3 एबे जिंस हला कोन एई केस रे हमकु दे देछि जे कर्वेचर दे देछि केते 40 तो f इज इक्वल टू कोन r/2 हमने आसीगला केते 20 रेडी और f कोन हेगला नेगेटिव -20 सेंटीमीटर बिकॉज़ इट्स अ कॉनकेव मिरर u केते हेगला देखो ऑब्जेक्ट हेगला केते ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हेगला से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किछि एंती मेंशन करछि कि of coordinate radius of curvature is given at origin 40 centimeter okay is placed at
is placed at origin. Okay, an object is placed at origin. ठीक है, भूल वाला क्वेश्चन मुझे. Three-dimensional coordinate system OXYZ, a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter is placed at x is equal to 80 centimeter. Okay. Our object is placed at origin. ठीक है, rectify कर दियो. Object is placed at origin. Okay, ये line टाको ये काटी दोची. Object placed at origin. Okay. ताले से कहला three-dimensional coordinate system OXYZ, right? Concave mirror radius of curvature दला थी कि and it is placed at x is equal to 80 centimeter and the object is placed at the origin. तो ऑब्जेक्ट को origin में रखा गला. Origin माने 80 और and concave mirror को कोड रखा गला x equal to 0 रे रखा गला माने 80. तो obviously एटा x equal to 80 centimeter. Okay, x equal to 80 centimeter and object origin रे अछि तो निहाते हमें कौन कहि परिबा ए डिस्टेंस टा केते गला 80 centimeter object distance, right? Radius of curvature given and this is placed at x equal to 80 centimeter and the object is placed at the origin x equal to 0, x equal to 80 to 80 centimeter. ठीक है, कैलकुलेशन वाले भूल जाओ. u केते आसी गला, u आसी गला minus 80 centimeter. So what we need to find? We need to find the image distance. अच्छा पिले मैंने image distance में केंदी पाइबा 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. तो सब जक वैल्यू पुट करियो पड़िबो. वैल्यू पुट करले केते आछे एटा 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u. Then you solve it. Minus 1 by 20 plus 1 by 80. आपको जो हमें लिखिबा इमेज डिस्टेंस केते आसीबो सॉल्व कले रही जो minus 80 by 3 centimeter. Right? तो नाउ एबे जदि हमें कैलकुलेट करिबा मैग्निफिकेशन काई कि मैग्निफिकेशन दरकार कारण एठी ऑब्जेक्ट टी पैरेलल भी जाउची परपेंडिकुलर भी जाउची. तो एई केस रे हमको यूज करियो पड़िबो वेलोसिटी रा फार्मूला. तो लैटरल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करता है. लैटरल मैग्निफिकेशन केते आसीबो लैटरल है ट्रांसवर्स माइनस v by u कैलकुलेट कर ले माइनस v b माइनस माइनस 80 by 3 u केते गला माइनस 80. कैलकुलेशन को देखो तो नेगेटिव नेगेटिव कटि गला तो आंसर केते आसी गला एटा माइनस 1 by 3. ओके एंड लॉन्गिट्यूडनल केते ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल हला r स्क्वायर ही जीवो. लॉन्गिट्यूडनल आसीबो केते ना माइनस 1 by 9. ठीक अछि. तो दी प्रकार मैग्निफिकेशन हमको मिल गला लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल. नाउ व्हाट वी नीड टू डू हमें ना कोन कैलकुलेट करिवो एबे हमें इमेज रो वेलोसिटी कैलकुलेट. देखो जोठी इमेज पैरेलल जाउची टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी जोठी पैरेलल अछि टू द प्रिंसिपल एक्सिस ता पे हमें कोन यूज कर परिबा टू मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल इनटू कोन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. और एटा केते longitudinal magnification minus 1 by 9 into velocity of the object parallel to principal axis केते तम माने ऑलरेडी लिखि छ parallel to principal axis रो velocity केते 9 9 i cap राइट. एटा को यूज करिवो 9 i cap आ केते आछिबो माइनस माइनस केते i cap. Then velocity of the image जदि हम नबा perpendicular to the principal axis आप यूज करिबा lateral into the velocity of the object perpendicular to it. एटा तो दीटा जिंस अछि दीटा केस अछि एटा 6 अछि और 3h तो minus 1 by 3 into 6j cap एटा केते minus 2j cap. Now velocity of the image perpendicular to principal axis এটা along y मुनेली এটা along कोनेली z नेगली. तो आप केते आसीला lateral और एटा minus 1 by 3 into 3k cap minus k cap. So now you write the velocity of the image. एटा केते आसी minus I cap minus 2j cap
माइनस के कैप सो तार मॉड जदि आम नहीं जीवा एटा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 तो रूट 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है लेंथी क्वेश्चन टा एटा ओके आई होप एटा समस्त बुझी पारलो जानिला या ठीक अच्छे पिले इज इट क्लियर जीवा हमें नेक्स्ट हमर कांसेप्ट जेटा देछि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो कुछ न्यूमेरिकल्स थिला आउ तापर रिफ्रैक्शन थिला डिस्कशन कर दबा छोटा टॉपिक था तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम डिस्कशन करेबी व्हाट इज रिफ्रैक्शन એટલે મને તમે જાણી છો रिफ्रैक्शन एमती का गोटे फेनोमेना जोथरे लाइट बेंड ही जाए ओके बा लाइट रो पाथ चेंज ही जाए सो इट इज दैट फेनोमेना व्हेन लाइट बेंड्स व्हेन इट passes obliquely from one medium to another medium तो जो फेनोमेना रे कौन हुए हमको देखिया को मिले चेंज देखिया को मिले इन द पाथ ऑफ लाइट चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट बा बेंडिंग ऑफ लाइट ओके केतेबेले बेंडिंग ऑफ लाइट देखिया को मिले जेते लाइट कौन हुए ना पास करे लाइट passes obliquely from one medium to another medium तो गोटे मीडियम रु जेतेबेले आ गोटे मीडियम को पास करे करेक्ट ताले ओब्लिकली जेतेबेले पास करिवो गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम लाइट बेंड हे जिवो एमती समस्ते 10th क्लास रे करथिवो ये रे इंसिडेंट रे दिस इज द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा तो जेता लाइट गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम पास करे एटा को n1 नै जाउची एटा को n2 नै जाउची n1 और n2 कोन रिप्रेजेंट करूची n1 n2 रिप्रेजेंट करूची तमरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करूची अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने कोन कि जानि छ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोन refractive index is generally called the measure of optical density of a medium. Optical density is different from the mass density. Optical density generally धारे रेशियो था स्पीड रो रेशियो था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जो कैलकुलेट करू स्पीड को लेके कैलकुलेट करू वेरी गुड ओके ठीक अछि ओके तो जनरली हमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी नो एटा हमें स्पीड और रेशियो को लेके कंपैरिजन करिता তাহলে যদি আমি এটি দেখিবা এটা হলা ইনসিডেন্স অ্যাঙ্গেল তো রে যেতବେଳେ ଯିବ ই স্ট্রেট যাই পারিব কি না ये बेंड हम जदि एटा 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 रेयर डेंसर अच्छी से हिसाब रे बेंडिंग हम तो बेंडिंग हेले ये तमरो कोन हे जो बेंड कर जिवो टुवर्ड्स द नॉर्मल और ए एंगल को कहवा जाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके वो एंगल को जेटा को रिफ्रैक्शन अच्छा पिले में रिफ्रैक्शन हवा पई इंपोर्टेंट हला कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी डिफरेंट जदि गुटिए मीडियम हे गला तो कोन पे रिफ्रैक्शन हबो बुझी पड़छ ना नहीं यदि n1 n2 इक्वल ही गला तो ऑब्वियसली किसी रिफ्रैक्शन हबनी n1 जहा अछि n2 भी से अछि मीडियम सेम अछि तो मीडियम सेम हेले लाइट तो तार स्ट्रेट पड़ेबो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन विदाउट एनी बेंडिंग ओके तो एटी हमको कोन दरकार मीडियम शुड बी डिफरेंट मीडियम अलग अलग हवा दरकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हवा दरकार देन ओनली हमें कोन देख परिबा रिफ्रैक्शन भलिया फेनोमेना देख परिबा ठीक अछि अच्छा रिफ्रैक्शन में कोन कोनटा चेंज हे जाय तो कोन कोनटा चेंज हुएनी ये कहि परिबो रिफ्रैक्शन रे कोनटा चेंज हुएनी को प्रॉपर्टी लाइट रो जोटा चेंज हे परिबो को प्रॉपर्टी लाइट रो जोटा चेंज हबन लाइट रो विभिन्न प्रॉपर्टीज सब रही छै राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पड़ी सच्चे ना देखो रिफ्रैक्शन है ना फ्रीक्वेंसी केबे चेंज हुएनी मन रखो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज हला जेतले रिफ्रैक्शन हबो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सब वाले सेम रहिबो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज सेम काहे कि पिले कारण एटा कहा पे डिपेंड करे एटा सोर्स ऊपर डिपेंड करे ओके तो दिस इज सोर्स डिपेंडेंट तो फ्रीक्वेंसी केबे बदलिबो
किंतु कोनटा बदली जीवो वेवलेंथ लाइट रो बदली जीवो वेलोसिटी लाइट रो बदली जीवो ओके ए सब प्रॉपर्टी सब लाइट रो चेंज हे जीवो तो कोन बदली जीवो वेवलेंथ और वेलोसिटी लाइट रो बदली जीवो होला तो वेलोसिटी एंड वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट कोन ही जाए चेंज ही जाए फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज होला एटा को हम कहले रिफ्रैक्शन अच्छा ठीक अछि पूरा बेसिक रू स्टार्ट कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिले माने दी प्रकार वेलोसिटी ठीक अछि गुड तकाड तो एबे हला रिफ्रैक्शन हला दी प्रकार जरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हला दी प्रकार गोटे हला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट इंडेक्स आ गोटे हला तमरो कोन जानचा गोटे कोन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना रिफ्रैक्शन देखिए ग्लास स्लैब भी देखिए क्वेश्चंस देखिए फाइंड आउट करिए ठीक है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउट हला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले माने एब्सोल्यूट माने हला जेतबेले हमें विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं था बा एयर नहीं था सेटा को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाए सपोज मु खाली लिखुची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एटा कहा रिस्पेक्ट रे एटा एयर रिस्पेक्ट रे निया जाउची ओके এটা হলা কেতে 1.5 ଆଉ এটা କେତେ 1.33 ହେଲା ତ ଏଇ ଭଳିଆ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ କହିଥାଉ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ କାରଣ ଏଟାକୁ ଏୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନିଆଯାଏ ବା ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନିଆଯାଏ ଓକେ ଜାଣିଲା ଆଉ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସବୁବେଳେ 1 ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 1 ଥାଏ एवरी टाइम इट इज ग्रेटर देन 1 अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को केमती में डिफाइन करबा जेमती मैं लिखली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर तले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रो माने का जेतबेले लाइट तमरे एयर रु ग्लास को आसुची तमे ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नउचे एयर रिस्पेक्ट रे तो एटी स्पीड हमें कहार यूज करिबा लाइट रे यूज करिबा कोठी एयर रे नबा आ स्पीड ऑफ लाइट हमें कोठी नबा ग्लास रे नबा एटा c बाय v को आ जाए हला c कोन c हला बेसिकली द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बा एयर और एटा को कोन को जाए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो मीडियम रे हमें लाइट को नउची लाइट जो मीडियम को प्रोपागेट करूची ठीक है अच्छा यू नो दैट फ्रीक्वेंसी इन बोथ द मीडियम आर सेम तो फ्रीक्वेंसी किसी इफेक्ट होना है ना कौन तो सी को हमें कौन लिख परिबा सी को हमें लिख परिबा कौन एफ इंटू लामडा सी होची एफ इंटू लामडा मत जानछन सी हला कौन एफ इंटू लामडा ये रिलेशन यूज कर परिया तो सी जदी एफ इंटू लामडा देखो ना डायमेंशन देखो एटा हला 1 बाय सेकंड एटा हला मीटर पर सेकंड बस जो नहीं एटा हला मीटर तो मीटर पर सेकंड आस जो ओके तो एटी देखो सी हला कौन एफ लामडा ना वैक्यूम पे नहीं गली एफ लामडा नॉट और मीडियम पे नहीं गली सी एफ लामडा मीडियम तो एफ एफ कैंसल आउट हो गला तो लामडा नॉट डिवाइडेड बाय लामडा एम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी हमें देखै पारिबे ओके लिख दल एटा वैक्यूम पे एटा मीडियम का बा एटा को हमें एयर पे कोइ परिबा एटा को हमें मीडियम पे कोइ परिबा ठीक अछि एका जिंस अच्छा सी रो वैल्यू समस्त जानिचो केते 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड डन यस एयर रे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी गुड रामजी हायर सेकेंडरी स्कूल कॉन्स्टेंटली आंसर देथिबारु बहुत बढ़िया जब हम पिला करि पड़छंती तो निश्चिंत हमें जेई एग्जाम दियो तमे केते जण क्लास करछो एबे
टोटल केते जण क्लास करछो रामजी हायर सेकेंडरी स्कूल रे केते जण एना क्लास होची पिला केते जण क्लास करछो अच्छा देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि हमें दबा रिलेटिव कोन रिलेटिव हला जतो लाइट गोटे मीडियम रे आ गोटे मीडियम जाउची सपोज एना मु तुमको एयर वेयर न दे मु कहबी लाइट धर जाउची कोठी ना ग्लास टू वाटर बा वाटर टू ग्लास तो ए केस रे आमे कोन नो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं ना कोन जेमती ग्लास टू वाटर गले आमे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर नो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास एटार माने हला से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass ओके सपोज लाइट तमर पड़ जाउची ग्लास टू वाटर को जाउची तो जता लाइट ग्लास टू वाटर को जाउची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर निया जीवो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मन रखिबो लाइट कोड कोड जाउथो लाइट जाउथो तमर कोड कोड ग्लास टू वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काटा निया जीवो वाटर रो ग्लास रिस्पेक्ट एटा को रिलेटिव को जाय तो जनरली रिलेटिव को केमते हमें लिखिबो देखो जतल वाटर रा में नोचे विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वाटर आम नौचे विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास लाइट जाऊे को ग्लास टू वाटर नौचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आम वाटर नौचे विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास नौचे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आम वाटर नबा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास और एठी जदी हम देखिबा एटा कोन एटा हला एब्सोल्यूट एयर रेस्पेक्ट और एटा को हम केते लिखिचे एन डब्ल्यू ए हला केते इट्स जस्ट सी बाय केते एटा हला मीडियम तो सी बाय हमें मीडियम 1 मीडियम 2 कर परिया हला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय केते सी बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय केते सी कटि गला तो एटा वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर हम लिख परिया माने लाइट जाउचे तम ग्लास टू वाटर तो जदि एटा मीडियम 1 हला एटा मीडियम 2 हला तो हम लिख परिबा एटा रेशियो कोन लाइट ग्लास मीडियम 1 तो v1 बाय v2 मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट v1 बाय v2 ओके मीडियम 1 रो और मीडियम 2 रो नेले विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो एटा को रिलेटिव कहबो अच्छा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 1 थरु अधिक भी हे परिबो 1 थरु कम भी हे परिबो ओके सो इट कैन बी कोन इट कैन बी ग्रेटर देन 1 greater than or less than suppose हमें जो कॉम्बिनेशन को नबा से हिसाब रे एटा कोन हे पारे 1 टू कम हे परिबो एवं 1 टू अधिक हे परिबो ठीक अछि डन बेसिक आइडिया जानि गलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब जक रिलेशन आ केमिति हम लिखुचे ए सब जक रिलेशन ओडा को ओके नेक्स्ट हम देखिबा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोन पिले माने समस्त जानिछ जेंति लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थिला वी आर हैविंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कोन अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जेतेबेले हमें लाइट नहीं थाउ ना मीडियम 1 रो मीडियम 2 लेट्स से एटाला इंसिडेंट रे एटाला नॉर्मल ओके एटाला एंगल ऑफ इंसिडेंस एटाला तम रिफ्रैक्शन एंगल अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो आ ऊपर जेई क्वेश्चन पचारे गोटे लॉ तो तुमको जଣା अछि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टर रे सब जको गोटे प्लेन रे थिबो आउ गोटे हला स्नेल्स लॉ कोन कहउची according to Snell's law हमें लिखि थाउ medium 1 medium 2 n1 sin of I is equal to n2 sin of R हला n2 sin of R अपने n1 sin I is equal to n2 sin R what is I I is the angle of incidence what is R R is the angle of refraction so n1 sin I is equal to n2 sin R तो कमे कोइ था हला तो ई केस रे जदि तुम भला भाबे देखिबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ये जो रहिला ना प्रोडक्ट रहिला n1 sin i इक्वल टू n2 sin r ओके ये जो प्रोडक्ट रहिला n1 sin i इक्वल टू n2 sin r हे गेल माने कोन एटा कांस्टेंट हे गेल n1 sin i जा आसला सेटा n2 sin r आसला त माने n sin of the angle
साइन ऑफ द एंगल सब कौन थाए कांस्टेंट थाए जेहेतु कांस्टेंट थाए आम ये बड़ कंक्लूजन ये ड्र कर परिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अधिक हम एंगल से कौन हो कमी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कम हम एंगल से कौन हम बढ़ी हेनी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते अधिक थाए मीडियम टा सेते डेंसर हो जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते कम थाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते अधिक रहिबो हला तो मीडियम टा सेते डेंसर हो जाए तो एंगल टा ऑटोमेटिकली कमी जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते कम हो बुझी ना जिते कम हो मीडियम टा सेते कौन हो जाए रेयरर हो जाए ओके तो एंगल टा सेते अधिक थाए तो ए केस रे लाइट कौन हुए लाइट बेसिकली बेंड करे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल तो ए केस रे लाइट कोड बेंड करे इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ओके नॉर्मल टू अवे बेंड करिवो एटा नॉर्मल आडू को बेंड करिवो ठीक अछि बेसिक्स क्लियर जानि परले तो जते बडे हमें डेंसर रु रेयरर को जाऊ हला तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाए जते बडे हमें रेयरर रु डेंसर आडू को जाऊ लाइट पड़ जाए टुवर्ड्स द नॉर्मल आडू को जाए एटा को हमें बुझेई परिबा फ्रॉम द स्नेल्स लॉ जीवा क्वेश्चन को हमर आइडिया सरी जाई छी एतिक आइडिया नाउ वी कैन डू सम क्वेश्चंस राइट समस्त ट्राई करिवे क्वेश्चन को जीवा एग्जांपल देखो आइडी एडी क्वेश्चन दला light propagates 2 centimeter distance in glass of refractive index 1.5 in time t naught. In the same time t naught, light propagates a distance of 2.25 centimeter in medium. Okay, तो से पचला refractive index of medium is केते पिले माने ट्राई करी मते कहलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आछी मीडियम रो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मु तुमको टाइम दूची 5 मिनिट्स रो मते आंसर करिकि
हम्म केते आसीबो ए काई पुनी को हला सुदा देखो लाइट प्रोपागेट करूची ग्लास रे हला 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हला गोटे ग्लास देछि तुमको तो ग्लास देछि आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1.5 केते डिस्टेंस प्रोपागेट करूची 2 सेंटीमीटर ताले so coach in the same time t naught light propagates a distance of 2.225 centimeter in a medium তাহলে এটি গ্লাস রে করুଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରେ କରୁଛି ସେ ମିଡିୟମ ର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ ସେ ପଚାରୁଛି ଯଦି 2.25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଆମକୁ କିଛି ରେସିଓ ବିଷୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା टाइम सेम दीजिए क्लास रे दीजिए डिस्टेंस दीजिए टाइम दीजिए सो व्हाट वी कैन डू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचाच हम स्पीड रो फार्मूला पके परिबो हां स्पीड रो फार्मूला कोन हम समस्त जानि छे डिस्टेंस बाय टाइम दीटा को टाइम टी नॉट तो एठी जदि हम स्पीड रो फार्मूला यूज करिबा डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस केते गेला 2 सेंटीमीटर आ स्पीड केते हबो हमें जानि ने तो ए देखो हमें जानते स्पीड कोन स्पीड ग्लास सेठी ग्लास मीडियम मीडियम दीच यार तो देन ना सी नहीं जीबी सेठी मीडियम जेतु देची तो हम यूज करबी v इज इक्वल टू डिस्टेंस केते 2 बाय टाइम केते t नॉट एंड वेलोसिटी मीडियम रे केते हुए जेकोसी मीडियम रे हम जदी वेलोसिटी कैलकुलेट करबा हम जानचे n इज इक्वल टू c बाय v तो v इज इक्वल टू केते c बाय n वेलोसिटी मीडियम रे एति की जाय तो ये रिलेशन टा को हम यूज कर परिया ना नहीं कर परिया सर n इज इक्वल टू c बाय v एंड v इज इक्वल टू c बाय n अच्छा ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें कहबो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काई की माने एठी जो कोनोसी मीडियम दो एटा विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिच बा वैक्यूम दिच तो v इज इक्वल टू c बाय n ताले ग्लास पे हमें कोन बा c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू 2 बाय t नॉट इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 रे हमें जानि ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते मीडियम तो एठी भी से फार्मूला यूज करबा स्पीड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे वी डोंट नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एनी मीडियम बट वी नो द डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस केते दला 2.25 देछ सो 2.25 डिवाइडेड बाय केते t नॉट अच्छा जदी भला भाबे देखिबो एटा ला इक्वेशन नंबर 2 एटा ला इक्वेशन नंबर 1 यदि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमें डिवाइड कर दवा ताले हमें पाई जिबो पाई जिबो इक्वेशन 2 को जदी इक्वेशन 1 से तो डिवाइड कर दवा 1 को 2 से तो डिवाइड कर दवा ताले हमें काम हो जिवो राइट अच्छा एटी ग्लास रो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जणा अछि तो डिवाइड करला परे देखियो कोन होची जदी रेशियो नै जिबो हमें c बाय n c बाय n into refractive index of the medium by c is equal to कहते 2 by t naught into कहते t naught by 2.25 तो c cancel medium देची glass रो देची refractive index तो 1.5 and this is 2 by t naught भी cancel 2 by 2.25 बस आपको सॉल्व करिवार अछि and you will get the answer ओके तो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको एठू मिल जिवो जो सॉल्व भी करियार अछि यदि पारुचो आपको ये रे कन्वर्ट करिकि सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर राइट करेक्ट नेक्स्ट को जिवो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आला
Example, an observer can see. अच्छा এটা হচ্ছে JEE 2020 র question. Okay, an observer can see through a small hole on the side of a jar. Side of a jar. The side of a jar. Okay. Jar radius ଦେଇଛି କେତେ ନା 15 centimeter. So କହୁଛି at a point at height of 15 centimeter, from the bottom from the bottom the hole is at height 45 centimeter. When the jar is filled with a liquid, when the jar is filled with liquid, okay, up to a height of 30 centimeter, the same observer can see the edge at the bottom of the jar. At the bottom of jar. So if the refractive index of liquid is n by 100, তাহলে n কেতে পিলাମାନେ এটা ক্যালকুলেট করিব only 4টি পিলা অଛ ତମାନେ ଏ ଚାଟ ବକ୍ସ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ 4ଟି ବି ନୁହଁ 3ଟି ପିଲା ସରି 3ଟି